the CM has done the Durga right had thing. gone there. The ADM had gone there on the direction of the DM. The Chief Minister had said that if there is any problem in any district relating to communities, the DM will be sacked. Then what was the reason? Why, when she went on the direction of the DM was left untouched and she was suspended? Why? This is a very big question which has to be answered by this. The inquiry, High Court has vindicated. the inquiry is The still going on. Allahabad High Neetaji. Court The has inquiry is going on, vindicated what and Durga if the DM has been found guilty, he also will be suspended. No, why? You, what minute, Mr. Siddiqui? Mr. Siddiqui, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Meenakshi, before I come to you, I want to say one thing. Mr. Siddiqui, don't insult every single Indian by behaving in a manner which is deplorable. Who are you to say? Who are you to say if the DM if the DM has said that there was no tension, he will also be suspended? You want the district magistrate to You want the district magistrate to file a false report? You want the district magistrate to lie? You want the district magistrate to say that there was tension where there is no tension? You want the district magistrate to manufacture reports because you want to polarize the situation before the election? No, ये क्या हो रहा है? ये मजाक हो रहा है लोगों के साथ. ये मजाक हो रहा है सिद्दीकी जी लोगों के साथ. आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ. आप ब्यूरोक्रेसी को इंटिमिडेट कर रहे हैं. आप क्या चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी झूठ बोले? हमारे No, ऐसा नहीं है. The CM has very good relations with the bureaucrats. Forget the relations. I don't care about the Chief Minister's relations with the bureaucracy, Mr. Siddiqui. The fact is the district magistrate has filed a false, honest report. You want him to file a false report and you are intimidating him. आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसा रिपोर्ट फाइल करेंगे, आपको भी निकाल देंगे. यानी कि कोई भी सच बोले आपके स्टेट पे तो आप निकाल देंगे. जो इंक्वायरी हो रही है, लाइक इंक्वायरी इज गोइंग ऑन. अभी इंक्वायरी अगर होती है, आप क्या कह रहे हैं? आपके चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है आपके स्टेट पे? सारा देश आपसे पूछ रहा है. मजाक बना के रखा है आपने उत्तर प्रदेश को. आई एम नाउ वांट टू गो अक्रॉस टू मीनाक्षी लेखी. अर्नब एक मिनट. सारा देश अगर चीफ मिनिस्टर से नाराज होता तो चीफ मिनिस्टर आज यूपी से निकल के आज ही इज गोइंग टू हैव. आप बात सुन लीजिए. आप बात सुन लीजिए सिद्दीकी जी, आप धमकी दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को. आप धमकी दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को. आप धमकी दे रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को. You said the chief minister is a pathetic chief minister. No, the crowd is following him. The youths are following him. No, this is not an advertising campaign for your chief minister. I know. But this is Meenakshi Lekhi, I am simply telling you, sir, please understand. Simple question. There is no communal situation. You want the district magistrate to say there is a communal situation because you will benefit from it? No. Is this why you were elected? We just want to say, just tell the right thing. What was there? What was नहीं, यहाँ पे आप देखिए. Just tell that. मीनाक्षी लेखी सवाल पूछ रहे हैं आपसे. मीनाक्षी लेखी, go ahead. Simple question, Mr. Siddiqui. आप मेरे को जो है दो चीजें बताइए. अभी मेरठ के अंदर राइट हुए, एक महिला और 4 साल के बच्चा मारा गया. वहां पे आपने एसपी को, एसीपी को, किसी को सस्पेंड किया, एएसपी को सस्पेंड किया. शिया सुन्नी राइट हुए 21 रमजान के बीच में. सुन लीजिए सवाल को. गरीब लोग मारे गए और गरीबों की दुकानें जली. आपने किस डीएम, किस एसडीएम को सस्पेंड किया और किस पुलिस वाले को सस्पेंड किया? यहाँ इन एंटिसिपेशन कोई राइट ना हो जाए आप सस्पेंड करते हैं. सुन लीजिए सिद्दीकी जी. मिसकॉन्डक्ट लीगली डिफाइंड टर्म है. लीगली डिफाइंड टर्म है कि मिसकॉन्डक्ट क्या होता है, वो लिखा हुआ है किताबों में कानून के मुताबिक. तो कॉन्डक्ट या मिसकॉन्डक्ट किसी की विम्स और फैंसी या किसी चीफ मिनिस्टर तय नहीं करता. अगर आपको तकलीफ थी आप ट्रांसफर कर देते. आप उसको सस्पेंड करके खास तौर पे 2 मैसेज दे रहे हैं. एक, आप उसको बुर्का पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी गलतियां हैं, और दूसरा आप उस पर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इंटिमिडेशन है, जिस तरीके से धमकाना चाह रहे हैं आप आईएएस और बाकी तमाम सिविल सर्विसेज को. और मैं ये कह दूं आपको सिद्दीकी जी कि आप देश के सर्वोच्च जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट को, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी वो आईएएस ऑफिसर. नहीं, आप सुन लीजिए मेरी बात. फैजाबाद में अब एक तरह से सीधी बात हो जाए आपके साथ सिद्दीकी जी. तो मेरे 5 सवाल है आपसे. आप मेरी बात 5 सवाल सुन लीजिए. फैजाबाद को 26 अक्टूबर को कम्युनल वायलेंस हुई थी. एक रिलीजियस प्रोसेशन के बाद आपने डीएम को सस्पेंड किया. प्रतापगढ़ में 29 अक्टूबर को कम्युनल वायलेंस हुई थी. बसेस
जलाई गई थी, आपने डीएम को सस्पेंड किया। गोंडा में 7 जनवरी को कर्नलगंज एरिया में काफी वायलेंस हो गई थी। 17 जनवरी को आपने कुछ एक्शन लिया एसडीएम के खिलाफ। लखनऊ में 17 जनवरी को जो मैंने आपको पूछा, एक आदमी को गोली दी, गोली से मारा गया, 15 लोग इंजर्ड हो गए कम्युनल वायलेंस में, आपने डीएम को रिमूव किया। अंबेडकर नगर में 4 मार्च को वायलेंस हुई थी, जब वहां पे हिंदू वाहिनी लीडर के किसी को शूट किया गया था, कर्फ्यू इंपोज हुई थी, आपने एसडीएम या डीएम के साथ कुछ आपने एक्शन लिया? आपने एक्शन नहीं लिया। इससे यह प्रूव होता है कि जहां पे आपको कम्युनल वायलेंस के खिलाफ सरकारी अफसरों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, आपने नहीं लिया सिद्दीकी जी। और आप सिर्फ दुर्गा शक्ति के खिलाफ इसलिए एक्शन ले रहे हैं क्योंकि वो एक ऑनेस्ट अफसर है, आप उनसे डर गए थे। आप एक 28-29 साल के आईएएस ऑफिसर से डर गए थे, इसलिए आप सारा जो आपका स्टेट मशीनरी आप उसके खिलाफ यूज कर रहे हैं। मान लीजिए बात आज। अर्नब जी, प्लीज एडमिट द फैक्ट्स। टेंशंस की आप बात कर रहे हैं, आप सुनिए, मैं आई एम आंसरिंग यू बैक। कम्युनल टेंशंस की आप बात कर रहे थे। हमारे प्रतापगढ़ में कम्युनल टेंशन बहुत जबरदस्त हो जाता। एक सीओ की जो हत्या हुई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें हमारे ही पार्टी के एक मिनिस्टर से जिनके ऊपर लोगों ने उंगली उठाई, तो उसको आपने डीएम को सस्पेंड किया था। दिया आप पहले बात तो सुनिए। आपने डीएम को सस्पेंड किया था। कैबिनेट मिनिस्टर। Did you have how many DMs have you suspended? कैबिनेट मिनिस्टर। You have suspended only one SDM because she caught you red-handed. उनका क्या करते हैं? She caught you red-handed. TSR Subramaniam, I want you back in the debate. TSR Subramaniam and Sudhinder Bajoria have been listening on patiently to this debate. It's not between you and me. No, Mr. Subramaniam. No, I know you disagree with me, but Mr. Subramaniam, what do you think? TSR Subramaniam सवाल कर रहे हैं आपको. Go ahead. Arnab, on these points, I think one or two critical facts have been missed now. One day before she was suspended, the district mining officer who has been behind all the raids for the last 8 months was transferred prematurely from the district. There were 3 attempts on his life in the past 6 months. It cannot be a coincidence that they were both working hand in hand, the SDM and the district mining officer on this. It can't be number one. Number two, I have seen a bit of administration over the past 40 years. I have not seen midnight suspensions. I have seen riots, I have seen murders, I have seen all over the state. The questions I'm asking are, the LIU report is referred to. Why is it surfacing today? I have a suspicion that about the LIU report, number one. Number two, the LIU report always goes to the DM. So if it is known to the government of India, how did it go? It goes by mail. How did it go to the DM? Number two. Number three, the first thing at 11:30 when the information comes, the first people to contact are the commissioner and the DM. Where they contacted. And ऐसी क्या आफत आ गई कि रात 12 बजे आपको किसी को सस्पेंड करना है? ऐसी क्या जल रहा है क्या? Is the district town burning? What is happening? It's not burning. And lastly, Can I come in? No. After Mr. Subramaniam, you can come in. I welcome Mr. Raghunandanan on the debate, please, tonight. Let's get some answers on this debate. Go ahead, Mr. Subramaniam. I'm extending this debate. And and today one senior minister is saying bureaucrats must stay within limits. What does it mean? What does it mean? When the law says, I Chief Secretary, I reiterated orders, in any public place, any religious building comes up without fear of any sentiments being affected in public place without approval, please demolish it. Supreme Court has reiterated this 5 times. So you should be, in fact, you will be out of limits. But Mr. 1 second. But you see, Mr. Subramaniam, even though, I'm sorry, even the Home Minister of India, Rita Bahuguna Joshi, is saying that bureaucrats must stay within limits. What limits? It's absurd. What limits? The limits that are given to them by your allies? I don't understand. Arnab, Didn't say limits, Arnab, he said every prescribed citizen should stay within administrative limits, norms. only bureaucrats. Look, this guy, you must have asked him a question to which this was and if the you take logical action against the answer. sand mafia, action against sand mafia, are you going outside your limits? What's happening here? That's what he's trying to say. Mr. Siddiqui is saying you should take a permission of the Samajwadi Party before you act against the sand mafia. I wonder why. What is your interest in the sand mafia? Siddiqui ji, आपका क्या interest है sand mafia में? जरा उसका वर्णन करेंगे? जरा वर्णन कीजिए आज विस्तृत तौर पे कि आपका इंटरेस्ट क्या है सैंड माफिया में? I'll do that. Definitely. We have no interest in sand mafia. Sand mafia का कोई इशू नहीं था. नहीं, आप क्या नहीं झूठ मत बोलिए, वहां पे सैंड माफिया का बहुत बड़ा इशू था.
नहीं, सैंड माफिया तो वहां पे अगर आप पता करेंगे देन दे आर मेरे ख्याल से 25 to 30 किलोमीटर तक वहां पे सैंड माफिया का कुछ है ही नहीं। तो ये सब चिट्ठियां जो दी गई है, जो ट्रकें पकड़ी गई, वो सब क्या है? आई एम टेलिंग यू द एरिया डिफरेंसेस कुछ ज्यादा है वहां पे सिर्फ नहीं, चिट्ठियां मेरे पास है, ये सब क्या है? नो नो, व्हाट इज ऑल दिस? ये जो एक्शन लिया गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दे दूं, एक मिनट। एक्शन जो सुब्रमण्यम जी कह रहे हैं कि आधी रात में व्हाट वाज द मिडनाइट डिसीजन। नो नो, आई एम आस्किंग यू, आप कह रहे हैं सैंड माफिया नहीं है, आपको कैसे पता है सैंड माफिया नहीं है? मैं एक मिनट, आपको कैसे पता है सैंड माफिया नहीं है? एक मिनट सुन लीजिए, आप मुझे कहिए सैंड माफिया कैसे नहीं है? कि वहां पे जो मिडनाइट, आप पहले मेरे आंसर का सवाल, अब जवाब, आप फर्स्ट यू आंसर मी, आप कैसे कह रहे हैं सैंड माफिया नहीं है? कमिंग ऑन दैट, नो, you answer that, don't come on that, I want you to answer that first. Midnight, no, I want you to answer that first. That midnight decision की बात, I want you to answer that first. How can you say there's no sand mafia? Please. No, because you are, why I'm asking you that, because you are labeling a young officer, you are young officer factually incorrect. You are saying that she's making up these facts. How do you know there's no sand mafia? I have these letters. I am not making anyone incorrect. I am saying this is a government's decision. नहीं, आप कैसे, तो आप, तो you are going back on your comment. यानी कि you are going back on your comment that there was no sand mafia. You are admitting there is a sand mafia. This is a decision on the. Are you admitting there is a sand mafia? Is there a sand mafia? No, I am not talking about it. Is there, why are you not talking about it? Is there a sand mafia or no sand mafia? Talk about it. There are no sand mafia. Oh my God, there is no sand mafia. That's fantastic. Now there is no sand mafia. Sudhindra Bhadoria, please react to that. What? Now there is no sand mafia. So even the Allahabad High Court, which has come down hard on your government. Yeah. The Allahabad High Court has very clearly stated what is the UP government doing against the sand mafia. Allahabad High Court has further stated that Durga Shakti Nagpal is an honest officer. That is the final word in this case. I think now the Samajwadi Party government in Uttar Pradesh should respect this statement which has come out from Allahabad High Court. They should restore her position. मैं आज इस 1 मिनट, मैं इस कार्यक्रम में I want to 1 minute. I want to challenge this gentleman, Mr. Siddiqui. Mr. Siddiqui, आपने कहा कि सैंड माइनिंग माफिया नहीं है, तो मीनाक्षी लेखी, रीटा बहुगुणा जोशी, सुधींद्र भदौरिया और सबके परमिशन, अनुपम खेर के साथ मैं आपको थोड़ा इसमें आपको थोड़ा आई वांट टू एजुकेट यू, मैं आई वांट टू एजुकेट यू अबाउट द फैक्ट्स. नहीं, getting education and receiving something knowledge is always good. बहुत अच्छी बात है, मुझे भी लगता है. I agree. मुझे लगता है कि जो सब सच्चाई आती है सामने, उसमें थोड़ा ज्ञान वर्धन और ज्ञान प्राप्त होना अच्छी बात है. और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपके स्टेट में माफिया ही नहीं, बहुत बड़ा माफिया चल रहा है आपके स्टेट में. इसलिए मैं इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नहीं, सैंड माफिया है, सैंड माफिया. आप हमारी रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद बात करते हैं. मैं रिपोर्ट चला दूं, मैं चला दूं. I'm talking about the sand mafia issue. I am talking about the sand mafia. I am talking about the sand mafia. Sand mafia. And now I will prove, Mr. Siddiqui, 1 minute. Now I want to read out an investigative report. I'll play and broadcast on Times Now. Mr. Siddiqui, आप टीवी देखिए 2 मिनट के लिए. For 2 minutes, here is our report. No, but okay, we'll get you the audio, we'll get you a TV. Let the viewers see what the reality is about the sand mafia, that the Samajwadi Party's Mr. Siddiqui says there's no sand mafia. Here's the truth. This honest officer was victimized for standing up to the sand mafia. Durga Shakti Nagpal was cracking down on the illegal mining in Noida. Even as Durga remains suspended, Times Now exposes the rampant sand mining in the region. This is the village of Asgarpur, adjoining Noida. A few kilometers from the Delhi-Uttar Pradesh highway. As we move along from Sector 94 Noida towards the village, we see rows of trucks lined along the Yamuna riverbed as mining continues unabated. Trucks are loaded with sand mined from the riverbed and moved unchecked towards other towns in Uttar Pradesh and even Delhi. Operating late into the night, several of these trucks can be seen moving from the riverbed towards the main highway connecting Delhi and Uttar Pradesh. During the course of the Times Now investigations in Noida and Greater Noida, we also found several of these goons of the sand mafia carrying dangerous weapons, and for obvious reasons we could not videograph them. The construction boom in and around Noida has led to a huge demand for sand.
thus allowing the sand mafia to go about their illegal activities unabated. In the course of 7 days, Durga Shakti Nagpal was able to seize 28 trucks and at least 3 earth movers. Most importantly, 27 men were as well arrested. Her move dealt a strong blow to the nexus between the politicians and the illegal mining mafia operating in Noida and Greater Noida. In Noida, this is Aditya Raj Kaul for Times Now. This was Asgarpur in near Noida. ये रिपोर्ट असगरपुर की थी, आज की रिपोर्ट है. क्या हम भी झूठ बोल रहे हैं? क्या हम भी झूठ बोल रहे हैं, सिद्दीकी जी? I am not commenting on this. Why aren't you commenting? I am just talking about. Why aren't you commenting? Suspension. Why aren't you commenting? की जो बात है. Why aren't you commenting? I've showed you the reality. Why aren't you commenting? This is all. This is what? No. What? What? No. What we are talking, the suspension. Let's come on this suspension. No. You want to talk about only the suspension because that you feel you've got some argument there. By the way, Ram Jethmalani is on the phone line. Mr. Jethmalani, I'm told that you want to take Durga Shakti's case free of cost. Look, what I have said is my response to your appeal that Durga is not alone. Tell her that I am a senior lawyer in the country, I am a member of parliament, and I am on her side, and my services are available to her free. I believe that she is an honest officer. I believe that the UP government consists of what shall I say? They are the accomplices of mafia, and I regret that the central government is doing nothing, and this Prime Minister, as usual, maintains what I call is criminal silence. Absolutely. This has got to be combated, and I will do my best in favor of Durga and see to it that she gets justice ultimately from society and the courts. Mr. Ram Jethmalani, thank you for joining us, and I think that's a great gesture, but I hope she can take it up. Thank you very much indeed.